Welcome to Rev Sports, to an exciting journey in the world of IPL super fandom. Today we have the pleasure of diving deep into the hearts and minds of passionate fans who live and breathe for their favorite IPL teams. From thrilling matches to unforgettable moments, these super fans have a lot of stories to tell. I am Gargi Raut and co-hosting with me is Ishan Shahane. But when it comes to the super fans, today we have Shubhayan joining from Chennai, Debashish Sen from the ITC in Kolkata. Next, we have Sugumar, who is a Virat Kohli and RCB super fan. We see him in every RCB match donning the colors of RCB and a difficult to miss headgear. Also joining us is Deepak, a Rohit Sharma super fan, along with Chota Gabbar, whose name explains that he is a Punjab Kings and Shikhar Dhawan super fan. And finally, we have KKR fan Ashok and Ram Babu and MS Dhoni fanatic. अ, हम ये शुरुआत करते हैं इस शो की। सबसे पहले मैं सुकुमार के पास जाऊँगी। आपकी ये आईपीएल जर्नी एज़ अ सुपर फैन शुरुआत कब हुई थी और कैसे आपका आरसीबी ऑब्सेशन शुरू हुआ? बताइए हमें। मैं पहले आईपीएल से 2008 since from first IPL I started supporting our team because as a Bangalorean I started supporting our team since from 2008. Never missed a single match in Namma Chinnaswamy till now. And first of all, I have to congratulate our women team for winning a trophy for the second edition. And 16 years we were waiting, and we were getting lot of trolls. But I can proudly tell that RCB fans, now entire world cricket fans are talking about the RCB fans. It really feels proud. And even though 2 days back there was an unbox event, it was not a match, but still the crowd, the energy was different level. And I'm really proud to be an RCBN. That is just fantastic to know, sir. Moving on to my favorite from this lot, because आपका look मुझे बहुत ही पसंद आया, छोटा गब्बर जी. अगर आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को, आपका लुक पहले बहुत ही अच्छा लगा मुझे एकदम शिखर धवन पूरा लगा. जब आप लाइव पे आए तो मुझे लगा शिखर धवन जी लाइव पे है. तो पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और मुझे आपसे पूछना था कि आप शिखर धवन के फैन कब से रहे हो और पंजाब किंग्स का सपोर्ट आप कब से कर रहे हो? मेरा नाम राम बहादुर यादव है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से रहने वाला हूँ. और मेरी स्टार्टिंग 2013 से हुई थी. तब गॉड गब्बर को मैं सपोर्ट करता 2013 से. उसके बाद आईपीएल भी मैं उनको सपोर्ट करने लगा था 2015 से, जब वो सनराइजर हैदराबाद में खेल रहे थे. तब से मैं उनको फॉलो आईपीएल में, हर आईपीएल में जाना आना सब कुछ मेरा जर्नी वही से स्टार्ट हो गया जी. और पंजाब जिस टीम से खेलते हैं उस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ उनको. और आपकी लुक इतनी सिमिलर है, तो राम बहादुर जी की आपकी भी कोई फैन फॉलोइंग है क्या अभी? क्योंकि आपकी और शिखर की इतनी सिमिलरिटी है लुक में, तो आपकी भी रहेगी फैन फॉलोइंग. है कि नहीं है राम बहादुर जी? तो मतलब लोग प्यार करते हैं, लोग प्यार. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अभी प्रेजेंट टाइम मैं ऑफिस में हूँ और सुकुमार अन्ना का मैसेज आया हुआ तो मैंने बोला, और अन्ना की कोई बात में मना नहीं करता हूँ. मैंने अन्ना मेरे बड़े भाई की तरह अपने हैं, तो जब भी कुछ भी होता है तो मैं अन्ना को बोलता हूँ कि ठीक है अन्ना, कोई नहीं. तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम मैं ऑफिस में हूँ और ये जर्सी पंजाब को सपोर्ट करने के लिए लेके आया, यहाँ पे लाइफ में जुड़ा हुआ हूँ. और बट मैं अभी प्रेजेंट टाइम ऑफिस में हूँ. ऑफिस से बाहर भी निकलता हूँ तो लोग उतना ही प्यार करते हैं, और मैच में तो पूछना ही नहीं है. 2019 में जब गब्बर दिल्ली की तरफ से खेल रहे थे, तो वहां पे मेरे साथ बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था. मतलब बच गया, दोस्त मेरा एक था तो तब मैं बच गया था. उस टाइम शायद आरसीबी और दिल्ली का ही मैच था वहां पे. तो पाजी ने 15 मारे थे, उसके बाद वो आउट हो गए. तो मैं भी पवेलियन साइड में बैठा हुआ था, मेरी जो सीट मिली थी, टिकट मिला हुआ था, तो उधर साइड में आ रहे थे. मैं भी वापस लग गया था पानी पीने के लिए. पूरी पब्लिक मेरे ऊपर मतलब वो हो गई थी. तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, बट मेरा दोस्त था और वहां की प्रशासन थी तो वो मेरे को बचा ली. तो लोग प्यार करते हैं, क्योंकि मैं भी गॉड गब्बर को दिल से प्यार करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ. तो लोग मेरे को भी प्यार करते हैं. मैं भी सबके साथ भी फोटो तो लेता हूँ, मैं किसी को मना भी नहीं करता हूँ. और बस यही है. And Shubhayan, you're in Chennai, of course. We all know the CSK and MS Dhoni craze that is there in Chennai. Tell us about everything that you've seen so far in all the days that you've been there ahead of the first match of the IPL.
The craze for MS Dhoni in this city is unmatched. The flavor of the entire city turns into MS Dhoni, turns yellow whenever the IPL is around. So it's amazing. And you know the match will be played tonight, so the crowd, it is going to be jam packed, and I'm pretty sure there are going to be thousands of supporters who have not got their hands into the tickets. They will stand outside and cheer for their favorite cricketer. But the situation is such that people are excited to watch Virat Kohli come after a long break. So we went to Dhoni Sports, famous sports shop yesterday, which is just around the corner of the Chepauk Stadium. And the guy, the store manager, did say that people are demanding the jerseys of MS Dhoni, but at the same time the demand for Virat Kohli's jerseys are also at an all-time high. So it is going to be a blockbuster clash. There's no doubt about it. There's going to be a glittering opening ceremony as well. We saw in the build-up to the game how the Chepauk Stadium throughout the night was going through the rehearsals, going through the lighting motions. What we are going to witness tonight in the opening ceremony. So it is going to be a great start to the tournament. And who else? Who bigger than MS Dhoni and Virat Kohli to start the occasion, the IPL 2024? Darji. 100% Shubair. And Gagi, if we speak of MS Dhoni, we cannot not get Ram Babu into the chat. तो राम बाबू जी पहले तो वेलकम, और पूछना था, आप MS धोनी के बहुत बड़े फैन हो और मैं भी आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ. आप कब अपने ये जर्नी कब स्टार्ट किया एग्जैक्टली और ये कैसे हुआ? तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बैकड्रॉप दे सकते हैं कि ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एग्जैक्टली ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था आपकी लाइफ में और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? बिल्कुल, मेरा जो जर्नी स्टार्ट था मोहाली पीसीए से स्टार्ट हुआ और 2006-7 से ये जर्नी कंटिन्यू स्टार्ट है और अभी तक कंटिन्यू है. और जब मेरी फर्स्ट मुलाकात धोनी सर से हुई थी वो धर्मशाला में हुई थी और तभी से सारी जगह का पास टिकट जो मिलने लग गया, तो हर एक जगह मैं पहुंचने लग गया. बस तभी से ये सिलसिला चालू है. और 2008 से जब धोनी सर ने सीएसके ज्वाइन करी थी, तो तब मैं सीएसके में नहीं आता था 2008 से, बट 2011-12 से मैं सीएसके को सपोर्ट करने लग गया हूँ और जहाँ जहाँ मैच होता है धोनी सर का वहाँ पहुँचता हूँ और बस 5 टाइम चैंपियन बन चुके हैं. छठी बार अब चाहेंगे ये साल भी छठी बार चैंपियन सीएसके बने. आप हर मैच के लिए जाते हैं राम बाबू जी? सब जगह जाता है जी. हाँ जी, जो भी मैच रहता है, इंडिया का मैच रहता है, सीएसके का मैच रहता है, कोई भी मैच है तो वहाँ पे हाजिरी लगती है और टीम को सपोर्ट करते हैं. Devashish, you've been in Kolkata, crazy for KKR. Tell us about that craze. And you're standing in front of, I think, a backdrop of the Eden Gardens in KKR colors. So talk about how crazy it is around the IPL in Kolkata. Yes, I am right now at the Dane of Kolkata Knight Riders, the ITC Sonar, where the team is put up, where the team is staying, and everywhere you see purple and gold. Means there, and the city, in fact, is also, there are a lot of brandings now, and you can actually, if you go turn to Eden Gardens, you could already see posters of Sunil Narine, Andrew Russell, Shreyas Iyer, and Gautam Gambhir. Obviously, talking about the fan following, obviously, when in 2012 when KKR won that final in Chennai, the following day when the team were given a grand felicitation, it was chock-a-block. Means there were almost a lakh of people. Obviously, there were not only 60,000-70,000 people inside the stadium at Eden Gardens. There were almost 20,000-30,000 outside the ground. And obviously, it took almost an hour and a half for the team, for Gautam Gambhir and his boys to come to the ITC Sonar where the team has been staying. And what an incredible atmosphere it was. Shah Rukh Khan climbing up the grills of the stands and waving at the fans. Usha Uttu doing dance numbers. There were Jeet, the Bengali actors. There were Lakshminathan Sukhnaman, and the chief minister himself, herself. Obviously, Mamta Didi was there, and so it was such an incredible atmosphere. And then in 2014 also, when Gautam Gambhir won that title, I mean, the city is painted purple and gold, and obviously there's an emotional bond this time around with Gautam Gambhir again coming back to the KKR side as a mentor. Shreyas Iyer also being back
after the after injury. He missed last season, so a lot to talk about. And also Mitchell Stark, the most expensive player in the history of IPL. So once he goes to the run up and starts bowling with a white ball in his hand, means just imagine, just visualize the atmosphere. It will be with the KKR fans, with everyone cheering for Mitchell Stark. So and obviously, as Ashok means, obviously we have someone, the super fan, KKR super fan Ashok, and everyone in the team loves him. Means obviously he has been given a gold pass as well recently. So it will be an electrifying atmosphere to all 7 matches, all 9 matches in the IPL. Gargi. अशोक जी, आपकी बारी है। देवाशीष ने ऑलरेडी बोला है कि आप केकेआर के बहुत बड़े फैन हो, तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, और ये जो मिचेल स्टार्क का जो मामला है, इतने हाई रुपए में उसको टीम में लिया है, तो व्हाट डू यू थिंक अशोक जी, आपको क्या लग रहा है कि ये वर्थ इट है, ये बाय? जो मेरा घर है, ये पहले बोलना चाहिए, मैं एक कोलकाता से 120 किलोमीटर दूर, जो ऑक्सफोर्ड ऑफ बंगाल नवद्वीप, वहां से मेरा घर है। वहां से मैं जब आईपीएल का यात्रा शुरू हुआ, तब 2008 में आईपीएल पहले आया। उस आईपीएल में मेरा जो नाम हुआ था केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो कोलकाता मेरा गर्व था। और उस टीम का जो कैप्टन था वो दादा था, सौरभ दादा था। और उस टीम का जो मैनेजमेंट का जो हेड था वो शाहरुख साहब था। एक टाई अप ने मैंने केकेआर का सुपर फैन हो गया। और उसके बाद 2020 में जब केकेआर ने सबसे बड़ा मैंने अवार्ड दिया, वो टीम बस में मेरा पिक्चर, वो जो मैदान में मेरा पिक्चर और जो होटल में मेरा पिक्चर, वो मेरा बहुत 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 खुश हुआ था। उसके बाद 18 मार्च इस बार मैंने केकेआर ने गोल्ड पास दिया, वो मैंने बहुत बहुत खुश हुआ। जो आईटीसी सुनार बांग्ला जो होटल है उसमें वो दिया। हर मैच में इस बार आईपीएल में जो भी मैच हो, मैं ईडन गार्डन्स हो, बाहर में जो भी मैच हो, उस मैच में पूरा फ्री में, वो आने का जाने का खाना सब कुछ फ्री में। तो मैं तो सिर्फ एक फैन हूँ, और इसीलिए मैंने इतना कुछ दिया केकेआर ने। मैंने सबसे पहले गोम्बी स्तर ने फिर आ गया, जो 2012 में और 2014 में केकेआर ने मैच 2 ट्रॉफी दिया। उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ, इस बार ट्रॉफी मैं जीतना चाहिए। और बहुत बढ़िया टीम है, सबसे जो डेंजरस बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो स्ट्राइक मेरा पास है। तो मैंने बहुत खुश हुआ, और इस बार मेरा कैप्टन शेयर चलाया, तो मैं बहुत खुश हुआ। एक बात बोलनी अशोक जी, पहले तो मुझे तो बहुत जलन हो रही है, क्योंकि मुझे भी आना है हर मैच में, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकता। एक और सवाल है आपके लिए, जब दादा निकले केकेआर से, सौरव गांगुली, तो केकेआर में माहौल वो टाइम पे कैसा लगा, और आपके आपके मुताबिक फैंस के इंप्रेशंस क्या थे? मतलब हार्ट ब्रेक था वो टाइम पे? नहीं, जो मैंने जो ये दिल में पूछा, जो आईपीएल था, दादा ने नहीं था उसमें, उस टीम में केकेआर ने, तो मैंने तो दादा ने बहुत मिस किया था। तो उसके बाद मैंने पहले जो 1-2 साल हुआ बहुत बहुत मिस हुआ था। तो उसके बाद फिर मेरा जो इंडिया का टीम है, बाहर का वर्ल्ड क्लास टीम केकेआर में आ रहा थे, तो इसीलिए मेरे थोड़ा आस्ते मैं दिल ठीक हो जाएगा। तो ये है जो केकेआर ऐसा टीम है, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है ईडन गार्डन्स, वो तो बहुत आइकॉनिक स्टेडियम है, तो बहुत अच्छा लगता है। इतना पीपल है, इतना सपोर्टर है, तो इसीलिए तो मैं दीवाना बन गया मैं। और दीपक, आप इतने सालों से रोहित शर्मा के फैन रहे हैं, अभी भी आपने एमआई की जर्सी पहनी है। इस साल जब आपको पता चला कि रोहित शर्मा कैप्टन नहीं रहे, सबसे पहले तो आपकी जर्नी बताइए। आप कब से एमआई को फॉलो कर रहे हैं, रोहित शर्मा को फॉलो कर रहे हैं, कब से आप सुपर फैन हैं? और फिर बताइए कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि रोहित शर्मा अब एमआई के कैप्टन नहीं रहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा नाम दीपक पटेल है और मैं नागपुर से हूँ। और मैं मतलब जब से बचपन से था, मतलब लाइक बचपन से ही फैन था, पर ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि स्टेडियम में जाके सपोर्ट कर पाऊँ, या फिर क्योंकि छोटा था ना, और उस समय 10th में था, तो कहीं घर से बाहर नहीं जा पाता था। तो जैसे मेरा 10th पास आउट हुआ, मैं तो फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे गया था 2019 में मुंबई इंडियंस का मैच देखने। और फर्स्ट मैच मैंने नागपुर में देखा था 2017 में, जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच था, उसमें रोहित सर ने सेंचुरी स्कोर किए थे। फिर वहां से मतलब फर्स्ट टाइम मैंने पेंट किया था, उसके बाद से फिर पेंट का सिलसिला जारी रहा।
और 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस का मैच देखा था, वो भी मुंबई में, और उसके बाद से भी सिलसिला जारी रहा। तो अभी जब जब मुंबई इंडियंस और इंडिया का मैच होता है तो हम लोग जाते हैं, मिलते हैं। सुकुमार अन्ना है, राम भी है, राम बाबू भी है, हम लोग सब मिलते हैं, सब साथ में अपने टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और अपने हीरो को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। Sugumar, first of all, it's a big game that's coming up. RCB, Royal Challengers Bengaluru versus Chennai Super Kings. So I want to know from your perspective, who are the key players this season you have an eye out for, and who do you think will really perform well? Yes, as you said, it's a high voltage matches. Especially we Indian fans always thinks RCB versus CSK. It's like a India-Pakistan match. I'm eagerly waiting, and of course now our team also strong. Even Chennai team also very strong. Because I always prefer Virat Kohli because Paf, who had played for CSK, and he got a lot of experience playing at Chepauk Stadium. And of course, even we have a good bowlers. Definitely, we are going to rock the show. And 16 years, as I said, we waited. Now, always ladies' luck will be there. So now, even Virat Kohli got his son. So I have told in many media because of his son's luck, we got first cup to our RCB, and followed by 16 years. What we waited back to back, we have taken one cup now. It will be cups, two cups, that for sure. So definitely Virat Kohli is going to do a miracle show, that for sure. 100%. I think all RCB fans will really celebrate if it's 2 cups because they've been extremely loyal for 16 years. Yes. I think can Yes, you speak about Glenn Maxwell as well? Because after that World Cup performance, he's a freak man. He loves playing his shots and best suited for the T20 format. So have you been following Glenn Maxwell as well since the beginning? Of course, that's the reason I told we have a good, strong team like Maxwell, Pap, Dinesh Karthik, Paldelar, Andu Travat, Virat Kohli, Siraj bowling. Just imagine, he's doing a great job in all formats, not only in T20, even in the Test. So I think this time we RCB fans, cricketers, they are going to give good entertainment for all the fans, not only to RCB fans. As you know, that only the team who gives more entertainment on the field is only, proudly I can tell, that it's only RCB team. और राम जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतने सारे मैचेस देखे इतने सालों से, आपका सबसे फेवरेट मेमोरी क्या रहा है इतने सालों में, मैच जो आपने देखा है उसमें से? छोटा गब्बर जी, आपसे हाँ हाँ हाँ। मेरा फेवरेट तो सारे मैचेस हैं, और आईपीएल का तो सबसे बेस्ट यही रहा 2020 का, जो कि कोविड के चलते इंडिया में मैच नहीं हुआ था, जिसमें गब्बर ने 106 रन मारे थे, वो भी पंजाब के खिलाफ ही, वो शायद दुबई में हुआ था। तो वो सबसे बेस्ट मेरे लिए था, और मैं लाइव जुड़ा हुआ था यहीं से। Okay. And Shubhayan, you're here, you're back again. So, MS Dhoni with that tweet of saying, I can't wait to be in this new role, something along the lines of that. What is the crowd in Chennai saying about all that? I think they also know that it was some advertisement gimmick at max, but they know that when Thala Dhoni he takes the field, he will be the captain, he will be the leader, he will be the center of attraction whenever he takes the field. Last season, when it was being tipped as his last season, we saw every crowd, every stadium wherever CSK played, it turned yellow. People were supporting Chennai Super Kings. Even Nitish Rana had to complain when the match was at Eden Garden that we expected our Kolkata crowd to support KKR and not support MS Dhoni. But such is the emotion around MS Dhoni that whenever they play, it is all about MS Dhoni. And it will be the same this time around also. The crowd will push them. The crowd will back them also. So it's going to be interesting how Chennai Super Kings, and they have made some great additions to their teams as well. Beat Rachin Ravindra, beat Daryl Mitchell. These two, I'm pretty excited. Beat the domestic talent also like Samir Rizvi. These are some explosive batters. So let's see how things pan out for Chennai Super Kings. But given the conditions here in Chennai, every time CSK takes the field here, they are going to be the favorites. Shubhan, I had a question for you. Do you think MS Dhoni can possibly be an impact player this season? There have been some speculations about it. What is your understanding from this?
Possible, because last season also he had that knee niggle which he's still carrying. He's not at his 100% fit. He's no more a 20-year-old, 20 or 25-year-old MS Dhoni. But last year also, despite that knee pain, he kept the wickets fluently, and we know he's the master behind the stump. And the way he was smashing the bowlers down in the order, he batted very less. He came down in the last 2 overs. Last over, that was the template for MS Dhoni last season. But he did fairly well with the bat. But let's see how things pan out, because he's 42-year-old now. He's no more a 35, 30, 25-year-old where your body recovers very quickly. So if there's any doubt that it could aggravate his knee injury, then Chennai Super Kings team management or MS Dhoni himself will say, okay, let's take a back step and take things lightly and not force his knee too much. So let's see what it is too early to say, but Yeah. later in the season, I think that's a possibility for sure. Because Ruturaj can keep wickets as well, and he's kind of a vice captain in this team. Yes. Devashish, moving on to KKR once again. Gautam Gambhir is back. We've discussed this in the past as well, but I think everyone would like to know from your opinion as well over here on this platform. Do you know the impact of Gautam Gambhir back in the squad to the fans? Because he's had a special place in the KKR's fans' eyes. So, what does it mean to a fan to see Gigi back with them? Yeah, Ishan, there are few players who has a bond with the franchise. Means of Virat Kohli. We all know he has been playing for RCB since the inception of IPL in 2008. Be it Mahendra Singh Dhoni, he has always been a means obviously a true Chennai Super Kings. Rohit Sharma for another example for Mumbai Indians, and Gautam Gambhir. Yes, he comes from Delhi Capitals, but then the bond that he shares with the people of Kolkata means obviously it was very emotional. Both me and Shubhan were there a few couple of days back at the Knights Unplugged, and when he said that means we will means, he will give out his best to see that Kolkata Knight Riders he can bring smiles back to the fans, back to the KKR fans, and that was a big statement, obviously, and he would like to see that same views being transcribed into all the players, all the Knight Riders players. Obviously, this is something because KKR does not have any local guys, local talent, local players in the side. Maybe one of the few franchise who doesn't have a local player in their squad. But then, obviously, now that we have a Gautam Gambhir in the KKR side. He itself is so emotional. Obviously, he always carries that bond between him and KKR. And so something that the players also. I was just having a word with Venkatesh Iyer. He also said that obviously गौती भाई ने जो हम लोग को कहा है we should always give our best to ensure that KKR brings smiles to its fans, and that's a huge statement. So we all hope that KKR put up a good show. They have a very very good decent side with the inclusion of Mitchell Stark, obviously Phil Salt adding more power in the batting, and also Shreyas Iyer coming back. He's fit, and they have a good mix of youth and experience. Rinku Singh, who can forget Rinku Singh, more matured. He's been a star for India, and not only just KKR but also for India. So KKR has the firepower to make the distance and perhaps go on to win the IPL title for a third time. Wow, okay. Ishan. अशोक, आपसे पूछना चाहती हूँ 2014 से हमने केकेआर को कब जीतते हुए देखा नहीं है आईपीएल का। आपको लगता है इस साल हो पाएगा? और अगर आपको लगता है कि कर सकती है केकेआर इस साल, तो कौन प्लेयर्स है आपकी नजरों में जो इस बार पूरा आग लगा दे सकते हैं आईपीएल में? मैं तो मेरा जो नजर है इस नजर में इस बार केकेआर तीसरी बार आईपीएल का ट्रॉफी जीतना चाहिए। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है केकेआर का वो बॉलर ने देना चाहिए। जो वो आईपीएल खेली है बैट्समैन के लिए, तो बॉलर ने अच्छा बॉल करने आता तो ये ट्रॉफी जो भी टीम ने बॉलर ने अच्छा बॉल किया था उस टीम ना चैंपियन होने का सबसे अच्छा दावेदार बनता है। तो इस बार जो मेरा टीम में स्टार्क आया था वो तो डेथ बॉलर है, तो इसीलिए मेरा भी बहुत चांस बढ़ गया। और इस बार मेरा जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमारा जो केकेआर ने ज्यादा प्लेयर जो इस रणजी ट्रॉफी में अच्छा रिजल्ट
आया था उस पे बैट में बॉलिंग में, तो ये इस बार ज्यादा से ज्यादा मेरा उम्मीद था इस बार ट्रॉफी हम तो जीतेंगे। और वो जो बड़ा बड़ा टीम है वो तो चेन्नई भी है ट्रॉफी जीतने का सबसे ज्यादा वाला, मुंबई भी है, उसके बाद तीसरा जो टीम है तो केकेआर है। तो इसीलिए मैं ये तो उम्मीद था। और मेरा तो रिंकू सिंह है, बहुत अच्छा बैट चल रहा है, सियासर भी आ गया और गंभीर भी मेरा चला है मेंटर में, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है इस बार केकेआर टीम। KKR team, we seem to be, I think a lot of us seem to be believing that KKR have a chance in the top 4. I think we can only wait and watch. दीपक, मैं आपसे पूछूंगा अभी, रोहित शर्मा ऑब्वियसली अभी कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या कैप्टन बन चुके हैं, तो आपको ये मोमेंट पे कैसा लगा बीइंग अ रोहित शर्मा फैन? और यंगस्टर्स की बहुत बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम में कि ये जो यंगस्टर्स जो टीम में आते हैं ये सारे सुपरस्टार बन जाते हैं, तो यंगस्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा ये सीजन? यंगस्टर्स काफी रोल प्ले करने वाले जिस आईपीएल, जैसे तिलक वर्मा हो गया, नेहाल वडेरा हो गया, और काफी है कुमार कार्तिकेय हो गए, जो कि काफी अच्छे मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया। लास्ट टाइम चेन्नई में ही मुंबई वर्सेस लखनऊ था, आकाश मधवाल सुपर बॉलिंग और तिलक वर्मा सर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। मतलब उन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि टीम को आगे ले जा सकते हैं वो। और फिर तो हर स्टेडियम में एक ही सेंस होगा, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, और वो होने ही वाला है। और काफी अच्छा बैलेंस टीम है, और हमारे पास थोड़ा बॉलर शॉर्ट है, जो कॉट्से को लिया था, बैरन ड्रॉप भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो उनके रिप्लेस में देखेंगे कौन से अच्छे बॉलर फिट बैठ सकते हैं। यस, और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में कुछ? अभी आप सबको ही पता है कि कैप्टनसी कैसे है। अभी रोहित सर उनके अंडर कैप्टनसी खेलेंगे, वो एक अलग प्रेशर नहीं रहेगा। रोहित सर को जाना है, फ्रीली माइंड से खेलना है, जो अब उनका नेचुरल गेम हम लोग ने वर्ल्ड कप में देखा है, जो आते थे बड़े बड़े छक्के फुल शॉट्स, बस हमको वही देखने मिलना है और वही देखने मिलेगा, अच्छी इनिंग्स देखने मिलेगी। Sugumar, over to you now. We have almost every franchise over here represented by a super fan. But who do you think is a threat for RCB among all the IPL teams, and who do you think is the easiest franchise to take on for RCB? As Ashok said, like a world-class best bowler, Mitchell Stark is there. So now, of course, Kolkata is a very strong team, no doubt. And I think Punjab, we can easily beat Punjab. So strong will be the KKR, that for sure, because as the world biggest, best bowler is there in the team, see the smile on the Mamu's face. We can see the smile on the Mamu face. Yes. Kolkata is really very strong, and Rinku Singh, as he said, everyone knows, like a young even a domestic player, what he said, like they proved, like they selected a good bowler and good batsman. So I think KKR will be the best strong franchise for this IPL 2024, no doubt. And Punjab, I think easily we can beat. So what I feel like personally. So hope for the best. So now 16 years, as I said, 16 years we waited. So we don't want to lose this year, and we want to lift the trophy at any cost. No matter whichever team comes, we will give the best. I don't know if Ram Bahadur is still on the call, but I'm pretty sure he wouldn't be too happy saying that. But I'm trying to. Is he there? I think his camera's off. But okay. He's there, but his cameras, I think, Camera is videos off. Yeah. connected. But I would have loved to hear what he Oh, is said. it? Okay. That is Chota Gabbar. That is Chota Gabbar. Chance now to counter it. Ram Bahadur ji, आप सुन? एक्चुअली नेटवर्क बड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे, कोई बात बहुत प्रॉब्लम। हाँ, Luckily, network. Thank you. What I said is did here. नहीं, I will tell him now. सुकुमार जी कह रहे हैं कि आरसीबी के लिए सबसे इजी टीम है पंजाब किंग्स बीट करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी इस बार का जो मैच होगा, सारी टीम अभी कोई टीम कमजोर नहीं है, सारी टीम अपने आप में मजबूत है। बट जो भी गेम होगा अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जो गब्बर भी है ना, तो डीवाई पाटिल में भी टूर्नामेंट खेल के आए हुए हैं, उसमें भी 99 रन बना के आए हुए हैं अभी। तो पंजाब की टीम भी बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं। सैम करन है, अर्शदीप है, लिविंगस्टन है, तो सारे तगड़े ही उसमें प्लेयर है। तो जो भी मैच होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा सेकंड मैच है दिल्ली के साथ है पंजाब का। तो ऑलरेडी पाजी दिल्ली से खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है कि किस बॉलर को कैसे खेलना है और किस
बैट्समैन को कैसे आउट करना है, तो अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि पंजाब को इस बार जीतना है। राम बाबू जी, अर्शदीप सिंह का रोल क्या होगा ये सीजन, क्योंकि ये एक प्लेयर है जो काफी अच्छा कर रहे हैं, वो अभी इंडिया टीम के लिए भी काफी अच्छा किया है उसने परफॉर्मेंस, बट अभी वो पंजाब किंग्स के लिए ऑलमोस्ट एक प्रोमिनेंट बॉलर की तरफ से आएंगे, तो उसका इंपॉर्टेंस और रोल क्या होगा? उनका रोल वही होगा, स्टंप तोड़ने वाला रोल होगा। बाकी दो स्टंप बैक टू बैक तोड़े हैं, बट एक्सपीरियंस उनके पास, अनुभव भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मैच भी खेले, टीम इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं, खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। तो और इस बार पंजाब के लिए भी उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। तो खैर, जो भी टीम है, जो भी कोच हैं, कैप्टन है, टीम है, आपस में बढ़िया करेंगे। Yes. Devashish, Yeah, Shubhain, RCB women's, we saw them lifting the cup finally. Do you think there'll be a little bit more pressure, added pressure perhaps this time around for RCB? I certainly feel so. I certainly feel so because Sugumar ji has been saying that the women's luck will be on RCB side. I agree with that. They will have that confidence. Okay, we have broken that drought, so let's see whether the men's team can do that or not. But I still feel that their bowling attack is a tad bit weak to go all the way. You can see KKR's bowling attack is extremely strong. Even Punjab for that matter, Delhi for that matter, they have decent bowling lineup. Lucknow Super Giants is a very good bowling lineup as well. Mumbai Indians, if everyone is fit and firing, then that's a very threatening bowling lineup with Jasprit Bumrah leading the attack. So it's going to be a task. RCB for RCB, the batting has always been the strong point. It will be the case this time around also. There will be big price tag on Cameron Green as well. So let's see how he fares in this IPL. So lot of dynamics will come into play, and IPL is such a tournament where teams take a couple of matches to determine to know their strongest playing 11. And with the impact player rule coming into play, two bouncers rule, and now the smart replay in terms of DRS, a lot of dynamics are going to change. As Ashok said earlier in this show, that whoever has the strongest bowling lineup will have the best chance to go all the way. So it will depend on how the bowlers execute their plans, because in Syed Mushtaq Ali, Punjab Kings' very own Arshdeep Singh, he used the double bouncer per over rule to the best against Baroda. If I remember, he bowled the 90th or 20th over. He picked up 2 wickets from his two bouncers. So it will be all upon the bowlers how they can execute and adapt to the rules, and of course the batters will take the center stage whenever they play T20 cricket. But all the teams right now are looking very strong, so it will all depend on what kind of momentum they pick up early in this tournament. yes. Devashish, Shubhain mentioned the two bouncer rule. So I would like to know your opinion on that, and how do you think this will benefit the bowlers? Because it's always been a batsman dominated game, and now suddenly with the two bouncer rule, things might change. Yeah, absolutely. It evens out the battle between the bat and ball. Obviously, obviously previously with only one bouncer, the bowlers the fast bowlers relied mostly on Yorkers, but now they will have the luxury of bowling in that extra bouncer, which will benefit them. So this is something that will definitely give the fast bowlers interested. Let's say it's someone like a Mitchell Stark or a Pat Cummins, even for that matter, Jasprit Bumrah. So everyone will enjoy this two bounces rule, means obviously. But talking about the bowlers, I would also like to agree with everyone. But yes, it's going to be the bowlers. Means obviously, IPL we all know the runs being scored, but the key will be the bowlers. Means the bowlers' performance, and a few of the teams, I think they have a very decent attack. But then, as far as KKR is concerned, obviously their biggest concern will be the form of Sunil Narine. Obviously, he has not looked good in this recent IPL seasons. Obviously, he has been working on his bowling, and the KKR team management has done a great job in hiring Carl, in getting on board Carl Throw. He is the same person who worked on Sunil Narine's action when he was called by ICC for his action. So KKR did a splendid job. Hats off, and he has been working with Sunil Narine
so one-on-one for the last two practice sessions, and it looks to be seen. Obviously, a confident Sunil Narine, an informed Sunil Narine can completely change the bowling lineup for KKR, given the likes of Varun Chakravarti and Shreyas Sharma. Means if KKR can, because KKR's bowling looks a very potent bowling attack. Means with the fast bowlers now that Mitchell Stark has joined the side, we have Harshit Rana, Vaibhav, and now the spin trio. So that looks ominous. But then it goes to be seen how Sunil Narine performs in this IPL. Yeah. एंड अशोक, आपसे पूछना चाहती हूँ अब, कोई एक ऐसा किस्सा बताइए। आई एम श्योर आपने बहुत सारे प्लेयर्स से भी बात की होगी इतने सालों में, कोई आपका फेवरेट किस्सा बताइए प्लेयर के साथ जो बहुत अच्छा रहा हो या बहुत फनी रहा हो। वो जो प्लेयर के साथ मुलाकात हुआ था सबसे अच्छा लगता है मेरा वो नीतीश राणा ने। जितनी बार नीतीश राणा के साथ मेरा जो मुलाकात हुआ, इतनी बार मेरा सामने में खड़ा होकर मेरा जो तकदीर वो इतने बार दे रहा है, सोए दे रहा है, मैं बहुत अच्छा लगता है। जितने बार और एक भी जो केकेआर का प्लेयर है वो हमारा जो ओपनर वो बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो हमारा मैंने जो वेंकटेश आया था वो बहुत अच्छा लगता है। जो भी मैं शंख बजाता है वो हमारा शंख का जो आवाज है वो सुनता है, वो दूरा हम सामने आता है। तो ये दोनों प्लेयर बहुत अलग लगता है हमारा दिल में। तो इसीलिए इस बार मैंने साथ मुलाकात हुआ था। तो इस बार मेरा अभी तक जो गंभीर आया था, मैंने तो चाह रहा था दिल में जो गंभीर के पास जाएंगे, तो अभी तक नहीं हुआ था। तो अब टीम अच्छा खेलेगा तो थोड़ा आना पड़ेगा ही। तो इस बार तो मेरा सपना भी था शाहरुख सर के साथ एक बार न एक बार मुलाकात होने के लिए। तो मैंने तो मुंबई में गया था, जो शाहरुख सर का जितना अवार्ड फिल्म अवार्ड पाया था, जो रेड चिली ऑफिस था उसमें गया था, उसमें ट्रॉफी धरा था। तो शाहरुख सर के साथ इसमें बात कोई हादसा नहीं हुआ था। तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ एक बार मेरा जो छोटा वाला फैन है, ये फैन एक बार ट्रॉफी देना चाहिए केकेआर को, और इस बार शाहरुख सर के पकड़ाना चाहिए, ये मेरा इंतजार है। नहीं अशोक जी, जरूर होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। दीपक, आपसे भी पूछना था कि आपका फेवरेट फैन मोमेंट अब तक क्या था आपके लिए एज अ फैन? भाई एशिया हाँ कप वैसे मोमेंट होगा उसके लिए। तो दीपू के लिए 100% इट इज गोइंग टू इट हैज टू बी एशिया कप मोमेंट वेयर द एंटायर टीम मैनेजमेंट handed him the trophy, him and Sudhir, the trophy to walk in the hotel lobby, and these guys were emotional that day. We need to hear He's that stuck, from I him. guess. Yeah, he's stuck. He's stuck, I guess. He's frozen, yes. वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज मैच जल्दी खत्म हो गया और फिर मैंने सुधीर भाई को बोला कि सुधीर भाई हमको ट्रॉफी पकड़ना है तो हमको टीम होटल जाना होगा। और सडनली जैसे हम लोग टीम होटल पहुंचे बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी। मतलब हम लोग टीम होटल के बाहर ही थे, तो फिर जैसे एंटर किया बारिश शुरू हो गई। फिर हम लोग अंदर गए, फिर वहां से पूरी टीम बस आई, फिर उन्होंने हमको देखा तो फिर सर ने ट्रॉफी लाके दिया। फिर वो एक बहुत मतलब मूवमेंट था कि जब हम लोग ने ट्रॉफी, मैंने फर्स्ट टाइम लिफ्ट किया, सुधीर भाई ने तो उसके पहले लिफ्ट किया था वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा अचीवमेंट था कि ट्रॉफी लिफ्ट करना। एशिया कप की फाइनल ट्रॉफी हम लोग ने पकड़ा था, बहुत अच्छा फीलिंग था वो, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। और एक फैन मूवमेंट और भी है कि जब रोहित सर का बर्थडे था तो एक इवेंट था, वहां पर बुलाया गया था और हमको बर्थडे विश करना था। तो हम लोग सडनली, हमको पता नहीं था, रोहित सर हमारे पीछे खड़े हुए, हम लोग बर्थडे विश कर रहे थे। तो सर मैंने बोला विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो रोहित सर पीछे से बोलते उधर क्या विश कर रहा है, इधर विश कर। तो मैं काफी शॉक हो गया कि रोहित सर कहाँ से आ गए वहां पर, और उन्होंने सरप्राइज दिया था। वो मेरे लिए अब तक का बेस्ट है। 100%। बट आप ये मोमेंट पे क्या सोच रहे थे? मतलब ये टाइम पे दिमाग में कुछ चल रहा है कि बिल्कुल ब्लैंक? नहीं, हमें तो पता नहीं था कि हमको खाली जैसा भी कॉल चालू है तो हम लोग विश कर रहे थे, कैमरे में विश करना था। और सडनली रोहित सर पीछे से आते हुए कंधे पे हाथ रखे ऐसे बोलते उधर क्या विश कर रहा है, इधर विश कर। तो देख के शॉक सडनली। मैं बोला सर आप यहाँ कहाँ से आ गए? तो क्या बोलते बॉम्बे भाई मेरा इलाका है, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। वो दैट्स तो क्लासिक वो रोहित बहुत शर्मा। और सुकुमार, हम बात कर रहे हैं फेवरेट मोमेंट्स की, तो आप भी अपना बताइए प्लेयर्स के साथ, किसी के साथ और किस्सा बताइए। अभी एक अभी हाँ। रिसेंट मेरा बर्थडे था, तो रिसेंट अभी मेरा बर्थडे था 16 को।
तो रोहित सर ने बहुत ही प्यारा वीडियो मुझे बना के सेंड किया हैप्पी बर्थडे का। वो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, लाइफ टाइम वो भी अचीवमेंट है कि रोहित सर ने पर्सनली मुझे मैसेज करके बर्थडे वीडियो भी सेंड किया। वाओ, क्या My बात है। special बहुत ही moment was like 2019, without expecting, the great legend Virat Kohli himself gifted me his match jersey along with his autograph. Apart from that, 2022, I celebrated my birthday at Sydney, and just 6 days, 6 days difference between my birthday and Legend's birthday. So there were 35 people standing in the gym, near the gym in the hotel. So I took a cake and I met him. And before that, nobody was there. I was alone. Then he requested me, I'll finish my gym first, then I'll come. Bad luckily, there were 35 people standing, were waiting along with the kids. Then I decided today it won't, because I met him many times. But the fan moment was like the personal bodyguard. He came to me and he informed to the hotel security saying that he is the super fan of Virat Kohli. Only he has to come with us. So from 27th floor to near his room, I carried a cake and I got a chance to discuss a lot of things with him. And I celebrated his birthday. And the same thing, normally people will go behind the players for goodies, either for a t-shirt, cap. And I requested, because I started learning wherever, whichever state I go, at least I learn basic things like your Kolkata, Kyamonochi, Balochi, something. But when I went to Mohali, so I started learning Punjabi also. He loves. The moment when he came back to Bangalore, I requested for some goodies. By my big dream was to receive his helmet and sweater. So I requested in Mohali. He came, the pink ball. Most of the people, they remember that Sri Lanka match pink ball recently. So he came, and in front of all officials during a practice, he called me and directly came to me and he asked me what things you need. Just imagine such a great legend. Then I said, legend, I need your sweater and helmet. He told, after the match, I will give. Before the presentation, in front of everyone, he gifted me his sweater and helmet. That was the best moment forever in my life. Where have you kept it right now, and how often do you wear that sweater? I kept I'm sure safely, you brother. not I very never use that. Even whatever player gives, the same thing, I keep safe. But till my last breath, it will be safely with me. That will be the best. Many people offered me, by seeing my post on the social media, I will give that much money, I will give this much money. I have never gone behind the money. Will be the best moment in my life, because the entire world loves him. And one thing, as a fan, I can proudly tell, initial stage, a lot of people were trolling about RCB, you never won the cup. But now the things have changed. Lot of people, lot of other franchisee fans, they are praying for our RCB team. I feel so proud, and I, on behalf of all RCB fans, a special thanks to other fans who are all started praising our team. See, this is even same thing. I go wherever media I talk, I always tell that please don't troll your team members. Same time, you respect opponent. It is a game. End of the day, it is a game. So please take it as a game. Winning and losing, it's part of game. So now I feel happy. Lot of people have changed. They are well matured, and we are taking as a game. And no matter if I'm going to support my team, same time I give respect to opponent team as well. But this is the best fan moment which I can tell. Virat Kohli is meeting Virat Kohli. He himself took selfie with our family. That also one of the best. Of course, I have a lot of memories, but still, he respects me a lot. That itself great thing in as a super fan. And very soon I will show you the helmet and sweater. Just you can carry on Yes, with other people. I'll come in 2 minutes. yeah, sure. Until then, I think we can move on to Chota Gabbar. He's been waiting to speak and his opportunity. तो आप भी जरा बताइए कि आपका favorite fan moment क्या था? मेरा अब 2021 का आईपीएल था और हम और दीपक एक ही होटल में गए हुए थे जहाँ पे पुणे मैच था, मुंबई और पंजाब का मैच था वहाँ पे। तो कॉनरेड पंजाब में कॉनरेड होटल का नाम है। हाँ ऐसे ही कुछ नाम था होटल का। तो हम गए थे, तो हम दोनों दीपक मिले हुए थे और दीपक फिर हम लोग मिलने के बाद दीपक अपने रास्ते निकल गया, मैं अपने साइड निकल गया। तो मैंने गॉड गब्बर को मैसेज ड्रॉप किया था मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम कोविड चला था, कोई प्लेयर नहीं किसी से मिलता था, कोई भी नहीं, सारे प्लेयर्स बबल में रहते थे अपना। तो
कोई भी नहीं मिल पाता था, बट उनका जो दिल है ना बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने मैसेज किया, उसके बाद स्टेडियम में पहुंच गया, प्रैक्टिस कर रही थी टीम वहाँ पे, तो मेरे को लगा शायद मैं वहाँ पे मिल लूंगा, फिर भी वहाँ पे भी मैं नहीं मिल पाया। बट उनका मैसेज आया था कि मैं होटल के बाहर शाम को मिल सकते हैं। तो मैं फिर फटाफट गया, बस निकल रही थी, मैं बाइक से था वहाँ पे, दोस्त के साथ बाइक से लेके गया, तो मैं पहले पहुंच गया वहाँ पे, फिर बाहर से मिले। उसके बाद फिर मैं मिल लिया, बाहर से मिल लिया मैं। उसके बाद जब मैं होटल के अंदर गया, तो मैं लॉबी में रुका हुआ था टिकट्स के लिए, जो पासेस मिलता है उसके लिए। तो मेरे को उम्मीद नहीं था कि शायद इसके साथ कुछ और भी चीजें मिल जाएगी, बट उनका सरप्राइज था, अपना जर्सी उन्होंने टिकट्स के साथ उन्होंने दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और पूरी लाइफ के लिए वो चीज यादगार रही है। Wow. और इससे पहले कि हम लोग यस यस सुकुमार। So this is the helmet Oh, personally used by the legend King Kohli. You can see the MRF logo. Oh, wow. And this is the sweater which used by our legend. My oh, goodness. incredible. Very special. And this jersey personally used by Virat Kohli with Awesome. autograph. You can see the Which autograph. jersey that you're wearing then? I am not Wow. wearing. This is officially every year I used to get from team. This, as I said, when I met Virat Kohli at Australia, this is the special ball which ICC has gifted. So I took Virat Kohli's autograph. Wow. So these four things, of course, I had lot of Virat Kohli's autograph on the miniature bat, and as every time Virat Kohli always he respects youngsters. So I have gifted many autographs to the youngsters, Virat Kohli's autograph. So I motivate the people as well. So wherever I go, normally initial stage I used to go to all the schools like private and government schools, but now private school the parents can afford things to the kids. But now especially I'm going to the government school. Who are active in the sports, I motivate them. Whatever gift I'm getting from the players, I give to the kids who are very active in the sport. And I have a tagline: winning and losing, it's part of game. Entertaining crowd is my aim. Born to encourage sports. Awesome. Shubhayan, I think it's just special. I think it's the fans that make the sport at the end of the day. So we're almost coming to an end to the whole segment. So any closing comments, Shubhayan? The fans make any sport. Any sport is the fans make it. The fans have made IPL popular. The fans have made Indian cricket popular. The fans have made WPL a huge success, and they deserve everything. And that is why we have organized this show, just to give them a bit of limelight. People don't know about their story. People only see them on TV screens or in some news channels where they're just cheering for their favorite players or favorite teams. But it is important to know their stories, because I have seen all of them travel to each part of the country during the World Cup. They were everywhere. Everywhere India were playing, these fans were there to support the team, wave the Indian flag. So they are, after the players, I think they are the most crucial component in the Indian sporting ecosystem. I am pretty sure the players are grateful for their support, but as a media fraternity also, we are grateful that they make cricket a very colorful sport, a very popular sport in the country. So kudos to them, and hopefully we will continue to see them cheer, wave the flag, chant the name of the players in every stadium wherever they go. I'm sure Perfectly we And will. one summed more up. thing, proudly, one more thing. And proudly Yes. because as Ram Bahadur is there, is my like younger brother and Mr. Deepak. So wherever state we go, it doesn't matter. Even though sometimes we get a good opportunity, sometimes we get a big sponsors to stay in five-star hotel. But we won't go that. We will have a small room together. We will go together to a hotel. We'll go together to a stadium. That moment which we cannot. Recently, we had been to Lucknow to Ram Bahadur's house. He's staying in a one big apartment, 3-bedroom apartment. So the way he gave the hospitality, see, this is called whatever we are earning, that is different. When we are together with Deepak, with Ram Bahadur, Ram Babu, Sudhir, and we have a unity, like it doesn't matter whether you are a big or small. We don't care. See, always Deepak is, Anna, you are so, you are doing for many years and you are so humble. And see, we don't see difference in between the fans. End of the day, we are human being.
Like always they calls me Anna. I feel proud. So we will forget whatever tension we are having personally or officially, but we are least bother when we are together. Only we have a masti and dance and masti. So we will enjoy like anything. We had been in Kolkata as well in a small room, 4 people. We were enjoying the way the people give respect, especially in Kolkata. The hospitality, Dada Mamu, really hats off to Kolkata people. Especially there is a one fan called Manoj is a big time of Rahul Dravid fan. Mamu knows him. So the way the love they gives now, it's unmatchable, and really we are proud to be a super fans, and we are brothers from another mother, and always my support will be there to my brother. Well, that's the beauty of sports. Yes, Ram Bahadur. ये हमारे अन्ना है, इनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए किसी को साथ लेके चलना, क्योंकि इनका जो नेचर है ना, वो हम लोग इनके मार्गदर्शन में कुछ भी काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग छोटे भाई हैं इनके, और ये लेजेंड हम लोगों के लिए, इतना बड़ा, इतनी सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को साथ में लेके चलना। बहुत ही अच्छे इंसान है ये। मैं तो हम लोग कई सालों से अपने साथ में वो करना, तो हम लोग का भी वो छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई का भी मार्गदर्शन में काम करना है। बट हम लोग जब भी इकट्ठा मिलते हैं, टीम के साथ भी मैच होता है, या फिर आईपीएल में हम लोग मिलते हैं। पिछली बार हम लोग मुंबई मिले हुए थे, तो एक अलग ही हम लोग की वो होती है, तो बड़ा मजा आता है, और इनके साथ तो अलग ही मजा आता है फिर। तो सबसे बड़ा दिल होता है वो हमारे अन्ना का है। Ashok ji, And a special thanks because he works for a CM office. You can see his background. And special thanks to him sitting in an office, then to government office. He came on the live. Hats off to him, because nowadays the generation people, they won't give permission, because always they want work is important. But still, he is sitting in an office and came on live. Big salute, my brother. अशोक जी, आपके पास शंख है आपका? नहीं, मेरा पास शंख नहीं है। मेरा पास जो बाल का जो काटा है, ये केकेआर है, और इसमें इस बार नया एसआर के है। तो मैंने एक बात, मेरा एक बात है जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरा सबसे जो हमारा जो सातों आठों सब फैन है, जो आईपीएल का जो अच्छा टीम का सब फैन है, इस फैन का मैं यही चाहता हूँ, केकेआर का जो टीम मैनेजमेंट है, उस टीम मैनेजमेंट का हर जो टीम है ना आईपीएल का मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजमेंट आता है जो प्लेयर जीतने के बाद प्लेयर बास में चला जाता है। और मेरा जो फैन है ना, इस फैन टीम हारा हो जीता हो, उसके बाद मेरा वो छोटा वाला सब फैन है, हम सब छोटा वाला फैन है। तो इसके बाद फैन कहाँ जाता है, किस जाता है, क्या में रहता है, क्या खाता है, ये टीम को जो बड़ा वाला टीम है ना, इस टीम का आईपीएल का, इस फैन में आना चाहिए। जो इतना बड़ा सबसे बिगेस्ट लीग चल रहा है इंडिया का, और इंडिया का पावर हाउस है आईपीएल, जो भी अच्छा खेल रहा है तो इंडिया टीम में आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहिए, जो मैनेजमेंट है आईपीएल का हर टीम का जो लीडर है, उस टीम का लीडर में ये ध्यान है चाहिए, हर टीम हमारा जो फैन है, सब फैन जब मैच जहाँ भी हो इंडिया में, उस सब एक साथ रहता है, खाता है, पीता है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यही चाहता हूँ, हर टीम का जो मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट के जो फैन है, अलग अलग फैन है, वो बहुत अच्छा फैन है। सब फैन का मैं धन्यवाद देता हूँ जो टीम को सपोर्ट करने के लिए। तो ये मैं चाहता हूँ, जो टीम को फैन का ऊपर फोकस आना चाहिए, फैन का जो क्या चल रहा है दिल में, जो प्लेयर तो आता है, खेलता है, चला जाता है, तो फैन क्या करता है, फैन की इसके बाद कोई भी जगह में, कोई गाड़ी में हो, बैठे हो, इधर पे उधर, वो सब हमारा जो सर सीनियर फैन है, तो सुधीर भाई है, राम बाबू है, जो भी फैन है, कोई भी मेरा नाम अभी तक ना रहा है, तो ये चाहना मैं चाहूँ, एक छोटा फैन ये केकेआर का मैनेजमेंट ने जो फैन के ऊपर ध्यान रखता है, सब जो मैनेजमेंट है, इस सब मैनेजमेंट के एक बार फैन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं हर तरफ टीम के लिए सब चाहता है, टीम हर जो फैन है ये चाहता है जो अलग ऊपर से ऊपर जाएगी हमारा टीम, जो टीम का अच्छा करता है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो टीम को जो फैन है, फैन को ध्यान देना चाहिए, बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए, आईपीएल नहीं, बीसीसीआई का जो इंडिया में मेरा तो फोकस है, सबका जो फैन है, सबका फैन सबसे पहले देश है, जो इंडिया का जो खेल है, सब फैन देखो एक होना चाहिए इंडिया का खेल में, जो वर्ल्ड कप में हुआ था। तो इसीलिए फैन को ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो फैन का जो है बेस है, फैन को
आना जाना, फ्री में टिकट करना, ये बीसीसीआई का मेरा जो फैन है ये चाहता हूँ जो बीसीसीआई एक दिन ना एक दिन ये करेगा ही। हमारा जो फैन है इतना सपोर्ट करता है, एक दिन ना एक दिन कोई ना कोई जो फिर मेरा जो है मेरा दादा का खूब करीब था, इसलिए एक दिन ना एक दिन दादा के ये मैं बोलूंगी जे जितना भी इंडिया फैन हो इस फैन इंडिया में जुड़ना चाहिए, तो सब तो इंडिया में सपोर्ट करना चाहिए, तो इसलिए। हाँ जी, ओके ओके। रोहित, सॉरी रोहित ही बोल दिया मैंने दीपक को। थैंक यू दीपक, मैं आपसे फाइनली पूछने वाली हूँ, आप बिल्कुल परफेक्ट नोट होगा अगर आप अपने रैप सॉन्ग के साथ ये शो खत्म करते हैं। ओके ओके। हाँ जी बिल्कुल। ये रोहित सर के लिए मैंने लॉकडाउन में रैप लिखा था और उनको मैंने अभी तक स्टिल सुनाया नहीं है, मतलब जब भी मौका मिलता है तो मैं भूल जाता हूँ रोहित सर को सुनाने के लिए। और अभी कभी मौका मिलेगा इस आईपीएल तो मैं श्योर सुनाऊंगा रोहित सर को रैप। और अभी आपको सुना देता हूँ, यहाँ मैं शेयर करता हूँ अपना रैप। हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है, शर्मा जी का बेटा सबसे बड़ा सुपरस्टार है, नाम है इसका रोहित शर्मा, कहते हैं इसको हिटमैन शर्मा, शर्मा जी के सुपर फैन दीपक शुभम राहुल मैन, करते हैं शर्मा जी को चेयर, पहले धीरे धीरे मारे बदले फिर के छक्के मारे आसमान में, बॉलर्स के आंखों में टिल के फैन का ख्याल किया, स्कोर जो विशाल किया, 3 बार मारे तूने 200 रन, तूने बड़ी बड़ी टीमों का भाई बुरा हाल किया, रोहित शर्मा बोले इसके डंका, बोले सारी जनता, बोले यही जमता, बोले रोहित शर्मा, बोले रोहित शर्मा, बोले रोहित शर्मा, बोले हिटमैन। पबजी में चले जैसे M416 वैसे ही चले हिटमैन का बल्ला, दाए दाए मारे हवा में सिक्सर, धीरे धीरे करे बॉलर्स का हल्ला, शर्मा जी का बल्ला सबके बात, समझ नहीं आई तो जनरेट में जा रही, शर्मा जी का बेटा सबके लेगा, हेडशॉट जैसे सबको फुल शॉट देगा, क्रिकेट में रोहित भाई फुल टू मैड है, तू बॉलर बैट है तो रोहित तेरा डैड है, रोहित तेरा डैड है, अभी अभी वारियर टूट मेरा ताजा, बड़ा तू फैन मुझे देखने दो आजा, नागपुर का शेरवा ना मुंबई का राजा, बॉलर्स की वजह जैसी बैन बजे क्योंकि फैंस का ख्याल किया, स्कोर जैसे चल किया, रोहित शर्मा बोलो रोहित शर्मा, बोलो रोहित शर्मा, बोलो हिटमैन। थैंक यू। Wow, that should be made as the official Rohit Sharma fan song. It It has. should. And he is very humble. He is humble, very down to earth person, very respectable person. What I have seen in his character. So he is new to this field, but still he got a good heart and very humble person and very helping nature. Yes. And that brings us to Thank the you so end much, of our Rafa. conversation. It has been incredible to talk to all of you, all of the super fans. It's been so incredible to get an insight into what your life looks like. But this is the beauty of sports, bringing so many people together, all supporting different teams. But at the end of the day, like Sukumar said, that they enjoy in the same room. They always go back after every match and enjoy life as it is. But thank you so much for joining us and stay tuned to Rev Sports. And Thank you, thank you everyone. for inviting us सबका together, मिलेंगे all जल्दी। fans together. And a special thanks to Rave Sports and a special thanks to Borya Majumdar Dada. He always encourages us, no, not only in India, even we go out of country. So we are always there for sports. Not only I'm supporting not only cricket, even I'm supporting other sports as well. So as I said, winning and losing, it's part of game. Entertaining crowd is my aim. Born to encourage sports. Once again, on behalf of all the fans across the globe, thank you very much for inviting us for this special moment. It will be a special starting IPL 2024 first Zoom call, and a special thanks to your entire team. And may Well, the thank best team win, as always. Jai Hind.